Identify the incorrect application of attracted armature type electromechanical relay. Simultaneous attracted armature relay for displacement protection या गलत है। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सही है। अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी ऑल और नथिंग रिलेज। डेफिनेट टाइम लैग ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए सही है। Attracted armature type electromechanical relay. It is the most simple both in construction as well as in its working principle. These types of electromagnetic relay can be utilized as either magnitude relays or ratio relays. These relays are employed as an auxiliary relay, control relay over current, under current, over voltage, under voltage, and impedance measuring relay. Hinged armature and plunger type constructions are most commonly used for these types of electromagnetic relays. Among the two constructional designs, the hinged armature type is more commonly used construction of attracted type relay. This relay is essentially a simple electromagnetic coil and a hinged plunger. Whenever the coil becomes energized, the plunger is attracted towards the core of the coil. Some NO-NC normally open and normally closed contacts are so arranged mechanically with this plunger that no contact become closed and NC contact become open at the end of the plunger movement. Normally a traction armature type relay is DC operated relay. The contacts are so arranged that after the relay is operated, the contacts cannot return to their original position even after the armature is de-energized. After relay operation, these types of electromagnetic relay are reset manually. Trip plunger type. Attractive armature type electromagnetic relay. Physical image. Plunger moving parts. Hinge armature spring. Coil electromagnetic. No contact normally open. NC contact normally closed. Common terminal. Internal construction diagram. Electromagnetic coil, yoke magnetic frame, hinged armature, NC contact normally closed, NO contact normally open, common terminal, spring ट्रिप। यह सबसे सरल और अधिक उपयोग में लाया जाने वाला रिले है। इसमें कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट और हिंज्ड आर्मेचर मूविंग पार्ट होता है। जब कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है तो आर्मेचर कॉइल की ओर आकर्षित होता है। इससे कॉन्टैक्ट की स्थिति बदल जाती है। नो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है। एनसी नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट खुल जाता है। डी एनर्जाइज्ड करने पर स्प्रिंग की मदद से आर्मेचर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आता है। एप्लीकेशन कंट्रोल सर्किट, प्रोटेक्शन सर्किट, ऑटोमेशन में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, इम्पीडेंस मेजरिंग रिले में। सिंबल सर्किट डायग्राम। NC normally closed, NO normally open, common coil. De-energized condition, NC closed, NO open, coil में करंट नहीं है, आर्मेचर अपनी ऊपर की स्थिति में होता है। नो कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है, नो कॉन्टैक्ट ओपन रहता है। NC ओपन, NO क्लोज्ड, कॉइल में करंट है, आर्मेचर कॉइल पर आकर्षित होता है, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। Identify the correct characteristics which all number system have. The size of base is more than the digit. Number system. The number system or the numerical system is the system of naming or representing number. We know that a number is a mathematical value that help to count or measure object and it help
In performing various mathematical calculation, types of number system, decimal सिस्टम में बेस 10 ठो, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 ठो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 गो, हेक्साडेसिमल में बेस 16 ठो। Characteristics of number system. Each numeral system is characterized by its base and the base is never a digit. The numeral systems have a base or set of symbols that allow representing the different numeral quantities. They have a number or quantity that is formed by the juxtaposition of the different elements. Each element within the numeral system has a weighted value. The number shown expresses or denotes the absence of a given quantity. It is a positional system. They are composed of digit explanation. The correct characteristics is that the the size of base is more than the number of digits. In the binary system, the digit can be 0 and 1 and the base is 2. In the octal number system, the digit are देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and the base is 8. In the decimal system, the digit are 9 and the base is 10. Which of the following is the one of the drawback of pump storage power plant? Machine is ideal for several hours. यही सही है. These plants cases pollution in large scale. यह सही बात है. It offers low flexibility in operation. यह भी सही बात है. They are costlier compared to other picking units. Pump storage power plant. A pumped storage plant is designed with two reservoirs, upper and lower, like every other hydroelectric plant. A pumped storage plant generates electricity by allowing water to fall through a turbine generator. Upper reservoir pumping, generating turbine electrical generator. Lower reservoir pumped hydro storage system. Advantage of pumped storage power plant. One of the main advantages of hydroelectric power is that it is renewable and generates no atmospheric pollution during operation, reducing our reliance on expensive oil to meet peak energy demand. It also has relatively low operational and maintenance cost. Another positive attribute of hydro storage plant is that it can be used where there is little natural water available to draw upon. Also, the upper or lower dams and reservoirs that hold the resulting water could be used as recreational facilities if their water levels do not rise and fall quickly or by too much in response to generation or pumping. Disadvantage of pumped storage power plant. The main disadvantage of pumped hydropower generation include high initial capital cost and potential site-specific negative environmental and ecological impact. The secretary, the scarcity of available site for two large reservoir and one or two dams. Long lead time, typically 10 years. High cost and machine remain ideal for several hours. What is the material used during cable spiking process? Metal. Spike testing for cable is designed to prove that a cable with a wire screen is capable of withstanding the maximum
designated voltage in the event of a sudden surge in current. A spike tool is a safety tool made of metal designed to keep electrical personnel safe. A spike pierces a cable neutral or sheath and its insulation through to the main conductor by breaking down the cable insulation. An arcing fault is created if the cable is energized prior to cutting. Image of cable spiker. The AC Vogue cable spiker is available in standard and heavy duty versions. The standard cable spiker can accommodate cable up to 110 mm in diameter, carrying voltage up to 275 kV. A heavy duty version is also available for cables up to 150 mm in diameter, carrying voltage up to 400 kV. केबल स्पाइकर केबल स्पाइकर एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका उपयोग अंडरग्राउंड पावर केबल को काटने या फॉल्ट चेकिंग से पहले किया जाता है। इसका मुख्य काम यह चेक करना है कि केबल डेड है या उसमें अभी भी करंट मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सिंपल लूप जनरेटर? थर्मल शील्ड का सिंपल लूप जनरेटर A single loop generator. Simple loop generator is a basic concept of the DC generator. It is a conductor placed between the magnet bars. These magnetic bars may be a permanent magnet or electromagnet commutator. NS galvanometer, carbon brush coil. Parts of simple loop generator. Stator. The main function of the stator is to provide magnetic fields where the coil spins. Rotor. A rotor in a DC machine includes a slotted iron lamination with slots that are stacked to shape a cylindrical armature core. Armature winding. Armature windings are in a closed circuit form and are connected in series to parallel for enhancing the sum of produced current. Poles. The function of a pole is to hold the field windings. These windings are wound on poles and are either connected in series or parallel by the armature winding. Pole shoe. Pole shoe is mainly utilized for spreading the magnetic flux to avoid the field coil from failing. Commutator. A commutator works like a rectifier that changes AC voltage to DC voltage within the armature winding. It is designed with a copper segment, and each copper segment is protected from the other with the help of mica sheet located on the shaft of the machine. Which of the following is the function of a static bar system in extra high voltage transmission? Reduction in war flow. Which of the following function of a static bar system in extra high voltage transmission line? Reduction in bar flow. To provide reactive bar control in order to support the power supply system voltage and to filter the harmonic currents in accordance with electricity authority recommendation, which prescribe the permissible voltage fluctuation and harmonic distortion. Reactive power bar compensator are required. Static bar compensator. A static bar compensator (SBC) is a set of electrical devices for providing fast-acting reactive power on which voltage electricity transmission network. It increases the reactive power transmission capacity of a line. Advantage. It increases the power transmission capability of the transmission lines. It improves the transient stability of the system.
It controls the steady state and temporary overvoltage. It improves the load power factor and therefore reduces line losses and improves system capability. The most commonly used SBC systems are as follow: thyristor controlled reactor TCR, thyristor switched capacity TSC, self reactor SR, thyristor controlled reactor fixed capacitor TCR FC, thyristor switched capacitor, thyristor controlled reactor TSC TCR लाइन। देखिए TCR TSC FC स्विच्ड रजिस्टर। स्टैटिक बार कंपनसेटर SBC एक फैक्ट डिवाइस है जो पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल करता है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल करता है, हार्मोनिक्स कम करता है, पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। जब ट्रांसमिशन पर लोड अचानक बढ़ता है तो वोल्टेज गिर जाता है, रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ती है, तब SBC तुरंत रिएक्टिव बार को सप्लाई करके वोल्टेज स्टेबल रखता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन द वैक्यूम इंटरप्टर्स रेटेड 1.2/3.6/7.2 किलोवोल्ट इंडोर मेटल इनक्लोज्ड कंट्रोल गियर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट स्टेम, फिक्स्ड टर्मिनल पैड, सिरामिक इंसुलेटर, फिक्स्ड चेंबर, आर्किंग चेंबर, मूविंग चेंबर। फिर देखिए बेलोज गाइड, मूविंग कॉन्टैक्ट स्टेम, मैकेनिकल कपलिंग फॉर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। A vacuum circuit breaker is a kind of circuit breaker where the arc quenching takes place in a vacuum medium. The operation of opening and closing of current carrying contact and associated arc interruption take place in a vacuum chamber in breakers, which is called a vacuum interrupter. Vacuum circuit breakers are more commonly used at system voltage level up to 72 kV. The vacuum contactors rated 1.2, 3.6, 7.2 kV is used for indoor metal enclosed control gear. The vacuum interrupters rated 3.6/7.2/12/36 kV is used for indoor metal clad switch gear. Real site image SBC in substation, TCR thyristor controlled reactor, TSC capacitor bank, thyristor switched capacitor control protection panel, fixed capacitor FC bank. What is SBC? SBC static bar compensator is a shunt connected fact device used in power system to control voltage by generating or absorbing reactive power bar quickly. Typical connection diagram line TCR TSC FC switched register maintains voltage stability, control reactive power, improves power factor, reduce line losses, improves system stability, filters harmonics. TCR thyristor controlled reactor circuit diagram line reactor TCR absorb reactive power, inductive bar used when system voltage is high. Thyristor control the current in the reactor by varying fringing angle, nature inductive bar absorbing. TSC thyristor switched capacitor circuit diagram line capacitor TSC supplies reactive power, capacitive bar used when system voltage is low. Capacitor bank is switched on off using thyristor at zero cross, nature capacitive bar supplying. अब देखिए FC फिक्स्ड कैपेसिटर सर्किट डायग्राम लाइन provides constant reactive power, always connected to the system, improves power factor, nature capacitive constant. Switched resistor circuit diagram used for damping oscillation and controlling overvoltage, connected only when required, nature resistive. Working principle of SBC: with system voltage falls, need capacitive bar, TCR off on, FC. TSC supplies reactive power, voltage is increased to desired level. When system voltage rises, need inductive bar, FC. TCR on,
TCR absorb reactive power. Voltage is decreased to desired level. Thus SBC control the voltage by switching controlling reactive element. TCR TSC FC resistor based on system requirement. Advantage of SBC: improves voltage profile, increase power transmission capability, improves power factor, reduce line losses, fast response, improves transient stability, reduce flicker and harmonics, enhance overall system performance. Application: transmission distribution system, voltage regulation, power factor improvement, industrial plant, wind solar power plant, load balancing, harmonic filtering, improving system stability. Important point जे एग्जाम SBC स्टैंड फॉर स्टैटिक बार कंपनसेटर. इसका मतलब क्या होता है? ये वैक्यूम इंटरप्टर या स्विच गियर की वोल्टेज रेटिंग होती है. यह इक्विपमेंट अधिकतम कितने वोल्टेज सिस्टम में सेफली काम कर सकता है. अगर किसी VCB पर लिखा है 7.2 किलो वोल्ट, तो इसका मतलब है यह ब्रेकर लगभग 7.2 किलो वोल्ट सिस्टम तक सेफली ऑपरेट कर सकता है. इसका उपयोग 1.2 किलो वोल्ट लो टेंशन इंडस्ट्रियल सिस्टम में मोटर प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है. 3.6 किलो वोल्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में मीडियम वोल्टेज सिस्टम में, तथा 7.2 मतलब 6.6 किलो वोल्ट सिस्टम इंडस्ट्रियल फीडर्स तथा इंडोर VCB पैनल में किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज ऑफ EHV लाइन्स. कंट्रोल ऑफ पावर फ्लो इन द लाइन्स इज सिंपल एंड natural. Advantage of extra high voltage lines. In a transmission line, the amount of power, distance, conducting material and power factor are constant. Hence, if the voltage is increased, the line losses are decreased because losses are inversely proportional to the voltage. If the losses are reduced because of higher voltage, naturally the efficiency of the line is increased. Voltage regulation is improved due to a reduction in line loss. Generating stations are located in remote areas. From the point of view of economy, feasibility and safety purpose, hence extra high voltage transmission is unavoidable for the transmission of large amount of power from these stations to the load centers, and control of power flow is natural and simple. Overall, there is a reduction in cost with an increase in transmission voltage. The load carrying capability of the line is given as surge impedance loading SIL, which is directly proportional to the square of the voltage. Hence, the increase in voltage result in more SIL and more power transfer capacity. With the increase in the voltage, the number of circuits and land requirements is reduced greatly. वैक्यूम इंटरप्टर VCB वोल्टेज रेटिंग 1.2, 3.6, 7.2 किलो वोल्ट. फिजिकल इमेजेज देखिए. 1.2 किलो वोल्ट वैक्यूम इंटरप्टर VCB 1200 वोल्ट. फिगर देखिए. यूज्ड इन LT पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. 3.6 किलो वोल्ट वैक्यूम इंटरप्टर VCB 3600 वोल्ट. यूज्ड इन मीडियम वोल्टेज सिस्टम्स, स्मॉल सब स्टेशन इंडस्ट्रीज. 7.2 किलो वोल्ट वैक्यूम इंटरप्टर VCB 7200 वोल्ट. यूज्ड इन 6.6 किलो वोल्ट सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल फीडर्स, इंडोर VCB पैनल्स. इंडोर मेटल क्लैड स्विच गियर करेक्ट ऑप्शन. VCB पैनल. मल्टी आउटडोर पोर्सलिन हाउस्ड. व्हाट डज देखिए. आउटडोर पोर्सलिन हाउस्ड सर्किट ब्रेकर. इंडोर मेटल enclosed control gear. Vacuum interrupter inside view. Top terminal metal shield bellows
fixed contact vacuum chamber, moving contact bottom terminal. Used in BCB vacuum circuit breaker. Arc is extinguished in vacuum, fast operation, low maintenance, long life, high dielectric strength. Which of the following is true statement for fixed speed system for wind power when compared to variable system? Higher reliability. Advantage of fixed speed over variable system for wind power. The construction of fixed speed wind turbine is simple, robust and reliable. Cost of electrical part is low. The variable speed system is somewhat more complex than the fixed speed system. No frequency conversion, hence no current harmonics. Which of the following error in moving iron type instrument can be removed by connecting a capacitor of suitable value in parallel with the swamp resistance of the instrument? Error with AC work only. Concept. Since swamping resistor and capacitor are used to reduce frequency related error in MI instrument, therefore error involving AC source, the parallel combination of swamp resistor and capacitor is used. Explanation. In moving iron instrument, the change in frequency causes an error due to change in magnitude of eddy current set up in the metal portion of the instruments. The reactance of the operating coils changes by the change in frequency. At high frequency, the meter will give a reading lower than the actual value, and at low frequencies, the meter gives a reading higher than the actual. This type of error can be eliminated only if the impedance of the coil is independent of the frequency. This is achieved by having a capacitance in shunt with the swamping resistance of the coil as shown in the figure. Supply voltage LR पैरामीटर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है। द पोजीशन ऑफ एच भी एल भी इज टू बी शिफ्टेड टू द अदर साइड सो दैट द क्लियरेंस बिटवीन द लाइव जंपर एंड अर्थड मेटल पार्ट्स शुड नॉट लेस देन 12 इंचेज। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। The clearance between the live jumper and earthed metal parts should not be less than 12 inches or 300 mm. The minimum clearances between the nearest live conductor and the earthed must be 6.1 meter. The minimum vertical clearance between the two live conductors must be 3.9 meter. The minimum horizontal clearance between the two live conductors must be 6.1 meter. What is the remedy for improper cooling system indication in electrical machine? Check cooling system and rectify. Checking the cooling system regularly keeps the electrical machine running in a proper manner. Types of cooling system plus surface cooling. The heat from the active parts is conducted to the closed external surface of the machine by means of a closed primary cooling circuit. Hollows, fines or ducts of a surface cooled motor enable the creation of an internal cooling circuit. Natural cooling. This cooling takes place due to natural air flow that is created by the hot air rising above or in the machines. Therefore, the heated air can flow upwards unhindered between the fines. Self-cooling. The cooling is carried out by a cooling medium that is moved by the machine itself. External cooling. The cooling is carried out by a built-on sub-assembly which has its own drive motor and ensures constant cooling irrespective of the main motor's speed. Moving iron instrument with swamping resistor and capacitor. Swamping resistor, capacitor. Working in moving iron instruments,
change in frequency causes an error in reading. To eliminate this error, a capacitor C is connected in parallel with the swapping resistor small r. This combination makes the impedance of the coil independent of frequency, thus the instrument gives accurate reading. Swapping resistance: high value non-inductive resistor made of manganese constant wire provides stability and reduces frequency error. Connected in parallel with swapping resistance help in frequency compensation, improves accuracy of instrument supply. Swapping resistor LRC. What is the Laplace transform of unit ramp function 1 by s square? देखिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है एक होता है, और देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस होता है। यूनिट रैम्प फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो 1/s स्क्वायर होता है। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोलर सेल टाइप्स using silicon semiconductor material except tetracrystalline silicon cell. Common types of solar cell are silicon cell. The majority of the solar cells on the market today are made of some type of silicon. By some estimates, 90% of all solar cells are made of silicon. The greater the purity of the silicon molecules, the more efficient the solar cell is at converting sunlight into electricity. Monocrystalline silicon solar cell. Monocrystalline solar cells, also called single crystalline cells, are easily recognizable by their coloring, but what makes them most unique is that they are considered to be made from a very pure type of silicon. In the silicon world, the more pure the alignment of the molecules, the more efficient the material is at converting sunlight into electricity. The main advantage of monocrystalline cells is that they also last the longest of all types. Many manufacturers offer warranties up 25 years on these types of photovoltaic system. Polycrystalline solar cell. Polycrystalline solar cell, also known as polysilicon and multi-silicon cell, were first solar cell ever introduced to the industry in 1981. Polycrystalline cells do not go through the cutting process used for monocrystalline cells. Instead, the silicon is melted and poured into a square mold, hence the square shape of polycrystalline. However, polycrystalline is less efficient than its monocrystalline cousin. Typically, polycrystalline solar photovoltaic system operated at 13 से 16% efficiency. Again, this because the material has a lower purity. अब देखिए amorphous solar cell. Thin film solar cell made out of amorphous silicon are traditionally used for smaller scale application, including things like pocket calculators, travel lights, and camping gear used in remote locations. A new process called stacking that involves creating multiple layers of amorphous silicon cell has resulted in higher rates of efficiency up to 8% for these technologies. However, it's still fairly expensive. Which among the following serves the two purposes? Pala, they support the existing coil on field coils. They separate out the flux in the air gap and also reduce the reactance of the magnetic path. Pole shoes
Which of the following statement is correct for primary cell? With regards to secondary cell, initial cost of primary cell is cheap. Monocrystalline solar cell made from single crystal silicon, high efficiency, 18 से 22% ब्लैक इन कलर, कॉर्नर एज आर कट राउंड, लॉन्ग लाइफ 25 ईयर प्लस, कॉस्टली। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल क्लोजअप, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर मॉडल। देखिए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशंस, रूफटॉप स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर पावर प्लांट। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल मेड फ्रॉम मल्टीपल क्रिस्टल सिलिकॉन, मीडियम इफिशियंसी 13 से 16%, ब्लू इन कलर, स्क्वायर शेप सेल्स, लो कॉस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल क्लोज अप, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉडल। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रीज, सोलर पावर प्लांट में। एमॉर्फस थिन फिल्म सोलर सेल्स मेड फ्रॉम एमॉर्फस सिलिकॉन थिन फिल्म, लो इफिशियंसी 6 से 8%, डार्क ब्राउन ब्लैक इन कलर, वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट, वर्क्स इन लो लाइट आल्सो। एमॉर्फस थिन फिल्म सोलर सेल, एमॉर्फस थिन फिल्म सोलर मॉडल, फ्लेक्सिबल। पोर्टेबल एमॉर्फस सोलर चार्जर, कैलकुलेटर्स, टॉयज, वॉचेज, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सोलर लाइट्स। What should be the clearance be above ground at the lowest conductor across a street for light voltage 6.1 मीटर। सेक्शन 77 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। 77 क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर। फर्स्ट नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन्स erected across a street shall at any part thereof be at a height of less than for low and medium voltage lines 5.8 मीटर, for high voltage line 6.1 मीटर। दूसरा नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन erected along any street shall at any part thereof be at a height less than for low medium voltage lines 5.5 मीटर्स, for high voltage line 5.8 मीटर्स। तीसरा no conductor of an overhead line including service lines erected elsewhere than along or across any street shall be at a height less than for low medium and high voltage lines up to and including 11,000 volts if bare 4.6 meters, for low medium and high voltage lines up to and including 11,000 volts if insulated 4.0 meters, for high voltage lines above 11,000 volts 5.2 meters, for extra high voltage lines the clearance above ground shall not be less than 5.2 meters plus 0.3 meters for every 33,000 volts or part thereof by which the voltage of the line exceeds 33,000 volts। इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ लोवेस्ट कंडक्टर एज पर सेक्शन 77। across a street मिनिमम 5.8 मीटर LMB, 6.1 मीटर HB। across any street देखिए 5.8 6.1 मीटर LMB मतलब लो मीडियम वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट। अब देखिए एलॉन्ग ए स्ट्रीट 5.5 मीटर लो टेंशन मीडियम वोल्टेज 5.8 मीटर HB हाई वोल्टेज के लिए एलॉन्ग एनी स्ट्रीट। HB मतलब हाई वोल्टेज एवं
1000 वोल्ट अप टू 11,000 वोल्ट आर एज अप्लीकेबल। तीसरा देखिए एल्सवेयर अदर देन एलॉन्ग ए क्रॉस स्ट्रीट, देखिए अप टू एंड इंक्लूडिंग 11,000 वोल्ट बेयर इंसुलेटेड 4.6 मीटर 4 मीटर एवं 11,000 वोल्ट एचवी 5.2 मीटर अप टू 11 किलोवोल्ट बेयर 4.6 मीटर अप टू 11 किलोवोल्ट इंसुलेटेड 4.0 मीटर एवं 11 किलोवोल्ट एचवी 5.2 मीटर। अब जैसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV मिनिमम 5.2 मीटर प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी 33,000 वोल्ट आर पार्ट देयर ऑफ एवं 33,000 वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन से मिनिमम क्लियरेंस 5.2 मीटर प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी 33,000 वोल्ट फॉर पार्ट देयर ऑफ एवं 33,000 वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एवं 33,000 वोल्ट। द इंटीग्रेशन एंड डेराइवेटिव ऑफ ए साइनोसोडल फंक्शन ऑफ AC साइनोसोडल फंक्शन sinusoidal in AC circuit analysis. The reason behind the use of sinusoidals in AC circuit analysis. Almost all natural phenomena have sinusoidal characteristics. Some examples include the motion of a pendulum, the vibration of a string, the ripples on the ocean texture, and the natural response to an underdamped second order system. Single in sinusoidal form are simple to generate and transmit using Fourier analysis. Any practical periodic signal can be represented as sum of sinusoids. Mathematically, एक sinusoid is easy to handle. The derivative and integral of a sinusoid are also sinusoidals. फार देखिए समाकलन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डी ओमेगा टी बराबर माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। हेयर ओनली फेज एंड एम्पलीट्यूड चेंज बट द नेचर ऑफ द साइनोसॉइड रिमेन्स द सेम। Which among the following category of rotary motion is incorrect? Switched current in rotor coils. Concept: it is clear that the torque exists only when stator and rotor coils carry currents. When only stator coils or only rotor coils carry current, torque cannot be produced. Different categories of rotary motion are: one coil each on stator and on rotor, two stator coils carrying two phase currents and rotor coils carrying DC, machines with permanent magnets, machines with no rotor coil but with permeance variation, switched currents in stator coils। देखिए इसका मतलब यह है कि एक वन कॉयल ऑन स्टेटर एंड रोटर मतलब दोनों साइड करंट है, अतः इसमें रोटर घूमेगा। और इसमें स्विच्ड करंट इन रोटर कॉइल्स मतलब सिर्फ रोटर में करंट स्विच करने से काम नहीं चलेगा, स्टेटर फील्ड नहीं होगा तो टॉर्क नहीं मिलेगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। देखिए टॉर्क एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ स्टेटर एंड रोटर कॉइल्स कैरी कंडक्टर। इफ ओनली रोटर कॉइल्स कैरी करंट, स्टेटर नॉट एग्जिस्ट एक्साइटेड, नॉट रोटरी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए यह सही है। बोथ स्टेटर एंड रोटर हैव करंट, देयर मैग्नेटिक फील्ड इन इंटरेंट, टार्क प्रोड्यूस्ड। और देखिए यहाँ पे इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। मशीन विथ परमानेंट मैग्नेट, देखिए स्टेटर करंट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग फील्ड, परमानेंट मैग्नेट रोटर इंटरेक्टेड टार्क रोटेशन। चौथा देखिए मशीन विथ नो रोटर कॉइल्स बट विथ परमियंस वेरिएशन, चार्जिंग रिलक्टेंस क्रिएट्स टार्क इवन विदाउट रोटर कॉइल्स। देखिए रोटर सेलिएंट पोल इसमें भी होगा। जी आई देखिए आई इधर वोल्टेज
What does the system shown in the above figure represent? Two-wire DC system without midpoint or third. The DC transmission system are classified as DC two-wire, DC two-wire with midpoint or third, DC three-wire. First देखिए DC two-wire. In the two-wire DC, the system one is the outgoing wire called positive wire, and the other is the return wire called negative wire, as shown in the figure below. The return wire is also connected to the earthing. देखिए यहाँ पे दूसरा DC two wire with midpoint or third. The two-wire DC system with midpoint or third is shown in the figure below. The maximum voltage between any conductor and earth is Vm, and the maximum voltage between conductor is 2 Vm. Increases the voltage level in comparison to two-wire systems. देखिए यहाँ पे Vm Vm 2 Vm. तीसरा है DC three-wire. In a three-wire DC system, there are two outer and a middle wire which is connected to earth. When the load is balanced, the current in the neutral wire is zero. DC three-wire system is shown in the figure below. Vm Vm I3 2 Vm I3. Conclusion. Synchronous motor used to supply bars and improve the voltage regulation. When overexcited motor draws leading current supply bars to the synchronous motor. Excitation DC supply. Exciter. Coupling. Synchronous motor supplies reactive power bars to improve voltage regulation. Operating as synchronous condenser. Synchronous motor AC synchronous grid. By adjusting excitation, overexcited supplies leading bars capacitive, underexcited absorb lagging bars inductive. Identify the correct statement for bridge rectifier when compared to center tapped. The magnitude of peak inverse voltage is half of that of the center tapped. The maximum voltage across a reverse bias diode is known as peak inverse voltage. Peak inverse for different rectifier is shown below. हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप का 2 Vm, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का Vm. Therefore, the ratio of peak inverse voltage across the diode in the center tapped full wave rectifier and the bridge rectifier is 2. DC two-wire systems. Positive wire, negative wire. Two wire, one is positive, other is return negative. Return wire is earthed. DC two wire with midpoint earthed. देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट earthed किया गया है. देखिए पॉजिटिव मिड पॉइंट earthed, नेगेटिव. देखिए DC थ्री वायर सिस्टम्स. DC देखिए मिडिल वायर earthed. Positive wire, middle wire earthed, negative wire. Three wires, two outer wires are positive and negative. Middle wire is earthed neutral. In balanced load, current in middle wire is 0. Which of the following is one of the type of corona discharge from EHV transmission line conductors? Pulseless corona formation. Corona extra high voltage transmission line. Pulseless corona is one of the types of corona discharge that takes place in extra high voltage transmission line conductor. The corona current pulse generated by corona discharge are source of ratio interference from time
Transmission lines. टाइप्स ऑफ कोरोना. पल्स लेस कोरोना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में होता है. कोरोना करंट स्मूथ होता है. रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है. नॉइज कंपैरेटिवली कम होता है. पल्स कोरोना फीचर. सडन पल्सेस जनरेट होते हैं. रेडियो टीवी इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है. क्रैकिंग नॉइज आती है. पावर लॉस ज़्यादा होता है. ग्लो कोरोना. फीचर. वियोलेट ब्लू लाइट दिखती है. डार्क नाइट में क्लियरली विजिबल. स्मूथ ल्यूमिनस डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसे ग्लो कोरोना भी बोलते हैं. ब्रश कोरोना फीचर. ब्रश हेयर जैसा डिस्चार्ज दिखता है. शार्प एज या पॉइंटेड कंडक्टर पर होता है. एयर आयनाइजेशन ज़्यादा होता है. Which theorem is advantageous when we have to determine the current in a particular element of a linear bilateral network, particularly when it is desired to find the current which flow through a resistor for its different values. Thevenin theorem. Which of the following maintenance tools is used to provide grip to apply torque for turning objects such as nut or bolts? Spanner. Open end spanner. A one-piece spanner with U-shaped opening that grips two opposite faces of the bolt or nut. This spanner is often double-ended with a different sized opening at each end. The ends are generally oriented at an angle of around 15 degrees to longitudinal axis of the handle. Ring spanner. A one-piece spanner with an enclosed opening that grips the faces of the bolt or nut. The recess is generally a 6-point or 12-point opening for use with nuts or bolt heads with a hexagonal shape. The 12 points fit onto the fastening at twice as many angles, an advantage where swing is limited. A switching device capable of making, carrying, and breaking electric current under normal and overload conditions is known as contactor. Contactor. A contactor is an electrical device that is used for switching an electrical circuit on-off. The basic difference between the relay and contactor is that the contactor is used in applications with higher current carrying capacity. The relay is used for lower current application. Contactor can be field mounted easily and are compact. These contacts are in most cases normally open and providing operating power to the load. When the contactor coil is energized, contacts are most commonly used for controlling electric motors. There are various types of contactors and each type has its own set of features, capability and applications. Contactors can break current over a wide range of currents from a few amperes to thousands of amperes and voltage from 24-volt DC to 2000 of volts. In addition, these electrical devices come in varying sizes from handheld dimensions to sizes measuring a meter or yard on one side approximately. The most common application area of the contactor is high current load. It is capable of making, carrying, and breaking electric current under normal and overload conditions. Operating principle of a contactor. The current passing through the contactor excites the electromagnet. The excited electromagnet produces a magnetic field casing the contactor core to move the armature. A normally closed NC contact completes the circuit between the fixed contact and the moving contacts. This permits the current to pass through these contacts to the load. When the current is removed, the coil is de-energized and opens the circuit. The contacts of the contactors are known for their rapid open and close action.
Identify the correct statement for extra high voltage AC transmission on comparison to HVDC transmission system. Pollution affect less and less frequency clearing of insulator is required. देखिए एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC कंपेयर टू हाई वोल्टेज DC transmission system. Pollution affects DC more than AC, hence less frequency clearing of insulator is required. Corona loss, radio interference and audible emission are more for AC transmission compared to DC transmission. The operation of HVAC system is simple, reliable, can be adapted easily. The power handling capacity of the line increases as well increase the transmission voltage. It is proportional to the square of operating voltage. The cost related to towers, insulator and different types of equipment are proportional to voltage rather than the square of the voltage. Thus, the net capital cost of the transmission line decreases as voltage increases. Therefore, a large power can be transmitted with high voltage transmission lines economically. AC voltage can be conveniently stepped up or stepped down. High voltage transmission of AC power reduces losses. Which of the following is the characteristics of an ideal operational amplifier? Infinite bandwidth. ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर आईसी होता है जो बहुत छोटे सिग्नल को बड़ा करता है। सबसे फेमस आईसी 741। ऑपरेशन एम्पलीफायर इनपुट से करंट ऑलमोस्ट नहीं लेता है, इसीलिए जो रेजिस्टेंस होगा इनपुट का वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब सोर्स पर लोड नहीं पड़ता, इनपुट करंट शून्य होती है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एक डिजिटल वोल्टमीटर सर्किट से बहुत कम करंट लेता है। आउटपुट रेजिस्टेंस 0, आर का मान 0 बोले तो आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए लोड को इसीलिए करंट दे सकता है। आउटपुट वोल्टेज सब स्टेबल रहता है। तीसरा इनफाइनाइट गेन, मतलब बहुत छोटा इनपुट भी बहुत बड़ा आउटपुट बना देता है। भी आउटपुट बराबर ए इंटू भी प्लस माइनस भी नेगेटिव। भी प्लस मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, भी नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग इनपुट, ए मतलब गेन। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गेन इनफाइनाइट माना जाता है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ मीनिंग हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एम्पलीफाई कर सकता है, लो फ्रीक्वेंसी भी हाई फ्रीक्वेंसी भी। देखिए स्लीव रेट क्या होता है। स्लीव रेट क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज कितनी फास्ट चेंज हो सकती है। स्लीव रेट मतलब डी वी अपॉन डी टी होता है, यूनिट वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अगर स्लीव रेट 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है तो आउटपुट 1 माइक्रो सेकेंड में 1 वोल्ट बदलेगा। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्फिनेटिव स्लीव रेट होता है, मतलब कि आउटपुट इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। अब देखिए CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आसान में कि जो सेम सिग्नल दोनों इनपुट पर आए उसको रिजेक्ट करना। एग्जांपल, दोनों वायर में सेम नॉइज आ गया तो गुड ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉइज रिजेक्ट करेगा, सिर्फ यूजफुल सिग्नल एम्पलीफाई करेगा। फार्मूला CMRR बराबर AD बटा के AC। यहाँ AD डिफरेंशियल गेन, AC कॉमन मोड गेन है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर AC बराबर 0, इसलिए CMRR इनफाइनाइट होता है। डिफरेंशियल गेन मीनिंग दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। बी आउट बराबर AD इंटू V1 माइनस V2। देखिए IN बराबर 0, नो करंट इंटर्स। IN बराबर 0, सोर्स पर लोड नहीं पड़ता। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट।
इनपुट करंट ऑलमोस्ट जीरो, हाई इनपुट इम्पोडेंस। दूसरा आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, आर जीरो शून्य। देखिए यहाँ पे आर जीरो का मान शून्य है। आउटपुट इजली लोड को ड्राइव करता है, आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रहता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इजली ड्राइव द लोड एलईडी। तीसरा इनफाइनाइट गेन, स्मॉल इनपुट 10 मिली वोल्ट, लार्ज आउटपुट 5 वोल्ट। देखिए ए का मान इनफाइनाइट, बहुत छोटा इनपुट डिफरेंस बहुत बड़ा आउटपुट बनाता है। आउटपुट इज मच लार्जर देन इनपुट। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, देखिए गेन डेसिबल में। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनफाइनाइट बैंडविड्थ, हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एम्पलीफाई कर सकता है। फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल एम्पलीफाई होता है। स्लीव रेट dB अपॉन dt, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। आइडियल इनफाइनाइट SR, लिमिटेड SR, अगर SR 1 माइक्रो सेकेंड में आउटपुट 1 वोल्ट चेंज करेगा। आउटपुट विथ लिमिटेड स्लीव रेट। CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, सेम सिग्नल नॉइज ऑन बोथ इनपुट्स। भी आउट शून्य। AD डिफरेंशियल गेन, AC कॉमन मोड गेन, सेम नॉइज ऑन बोथ वायर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिजेक्ट। अब देखिए डिफरेंशियल गेन AD, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ डिफरेंस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। फिजिकल इमेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741। इन डायग्राम IC 741। ऑफसेट नल, इन्वर्टिंग इनपुट दूसरा, नॉन इन्वर्टिंग तीसरा, -V, VEE, NC सातवां, V प्लस VCC, आउटपुट पाँचवां, ऑफसेट नल। द इंड्यूस्ड वोल्टेज across an inductor is zero if the current through it is constant. What does the above statement means? It means an inductor acts as a short circuit to DC. A solenoid of 200 cm is wound on a brass tube. If the current through the coil is 0.25 ampere, calculate the number of turns necessary over the solenoid to produce a field strength of 250 एम्पीयर टर्न पर मीटर एट द सेंटर ऑफ कॉइल। प्रैक्टिकल सेटअप, रियल इमेजेस, DC पावर सप्लाई, अमीटर। देखिए लंबाई 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, सेंटर ऑफ कॉइल, लेंथ देखिए स्मॉल l। गिवन डाटा 0.25 एम्पीयर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर H बराबर 250 एम्पीयर टर्न। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न। 3D कट व्यू देखिए, सेंटर ऑफ कॉइल, ब्रास ट्यूब, कॉपर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड H is uniform and along the axis. फार्मूला फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड H बराबर NI/L। H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर टर्न पर मीटर में, N नंबर ऑफ टर्न, करंट A, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड देखिए L मीटर में, इसका मान जाएगा 2000 टर्न्स। देखिए सेंटर ऑफ कॉइल, 3D व्यू, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। Which of the following is not one of the characteristics of MIS in energy auditing? Post-oriented. Energy Management Information System, EMIS. An Energy Management Information System, EMIS, is a performance management system
that enables individuals and organizations to plan, make decisions, and take effective actions to manage energy use and cost. Characteristics of MIS energy auditing are system approach, exception based, subsystem concept, need based, long term planning, integrated, फ्यूचर ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS, सिस्टम अप्रोचेज, दूसरा मैनेजमेंट ओरिएंटेड, तीसरा नीड बेस्ड, चौथा एक्सेप्ट बेस्ड, पाँचवा फ्यूचर ओरिएंटेड, छठवां इंटीग्रेटेड, सातवां लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आठवां सब सिस्टम कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इन generator terminal equipment? Limit transient voltage surge or transient voltage. A sudden rise in voltage for a very short duration on the power system is known as a voltage surge or transient voltage. Transient or surges are temporary nature and exist for a very short duration, a few hundred microseconds, but they cause over voltage in the power system. They originated from switching and from other cases, but by far the most important transient are those caused by lightning striking a transmission line. When lightning strikes a line, the surges rush along the line just as a flood of water rushes along a narrow valley. When the retaining wall of a reservoir at its head suddenly gives way. In most cases, such surges may cause the line insulator near the point where lightning has struck to flash over, and may also damage the nearby transformers, generator, other equipment connected to the line if the equipment is not suitably protected. देखिए वेव टेल, टाइम माइक्रो सेकेंड में, T1 देखिए, T2, EM/2 EM। To overcome that following surges protection device is used: अर्थिंग स्क्रीन, दूसरा ओवर हेड ग्राउंडिंग वायर, तीसरा लाइटनिंग अरेस्टर और सर्जेज डाइवर्टर्स। What is the category of generating unit of less than 100 megawatt capacity? For energy audit, non-reheat stoker fired, non-reheat stoker fired plant. These generating units are used in applications with thermal capacities below 100 megawatt. In these boilers, the fuel is fed by a stoker onto the grate where it is ignited by heat from the refractory. As the fuel travels down the grate, it continues to burn with primary air coming from below. Once it reaches the end of the grate, the non-combustible residues fall into the ash pit. Meanwhile, the flue gases travel into a mixing chamber where the combustion process is completed, finally passing through the heat exchanger where they give up their heat to generate system. Identify the checks which is not necessary prior to starting of a machine. Efficiency test, testing of an electrical machine. First following are necessary pre-starting test for an electrical machine. पहला वाइब्रेशन टेस्ट, दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, तीसरा लोड टेस्ट विच इंक्लूड नो लोड एंड फुल लोड टेस्ट, तीसरा लुब्रिकेशन एंड कूलिंग टेस्ट। अब देखिए दूसरा, फॉलोइंग आर द नेसेसरी पोस्ट स्टार्टिंग टेस्ट फॉर एन इलेक्ट्रिकल मशीन। एफिशिएंसी टेस्ट, टेम्परेचर राइज टेस्ट, तीसरा वोल्टेज रेगुलेशन टेस्ट, चौथा सर्ज टेस्ट। कैटेगरी ऑफ जनरेटिंग यूनिट 100 मेगावाट से नीचे फॉर एनर्जी ऑडिट। Non-reheat pulverized coal. Steam is generated in boiler. Steam goes directly to turbine. No reheating. Exhaust steam goes to condenser. Used for smaller capacities.
simpler cycle, lower efficiency than reheat plants. Pulverized coal burner, boiler, steam turbine, generator, condenser, feed pump, cooling water typically used for units less than 100 megawatt. अब देखिए दूसरा, नॉन रीहीट स्टोकर fired. Fuel coal is fed by stoker onto the grate. Coal burns as it moves on grate with primary air from below. Ash falls into a spit. Steam goes to turbine. No reheat. Used for capacities below 100 megawatt. Boiler. Coal from stoker grate. Ash spit. Turbine, generator, condenser, feed pump, cooling water. Most common type for less than 100 megawatt. Reheat pulverized coal. Boiler, pulverized coal, high pressure steam turbine, HB reheater, reheated steam turbine, generator, condenser, feed pump, cooling water. Steam is generated in boiler. High pressure steam expands in HP turbine, then it is sent to a reheater in boiler and heated again. Reheated steam goes to LP turbine. Higher efficiency than non-reheat plants, usually for higher capacities 100 megawatt से ज़्यादा, but small units may exist, not common for 100 megawatt. Reheat stoker fired. Boiler, coal from stoker gate, spit, high pressure turbine, HP reheater, feed pump, reheated steam turbine, generator, condenser, cooling water. Coal is burned on stoker grate. Steam expands in HP turbine, then reheated in reheater. Reheated steam expands in LP turbine. More efficient but costlier. Generally used for higher capacity, generally 100 megaवाट से ज़्यादा, रेयर फॉर 100 मेगावाट से नीचे. नॉन रीहीट पल्वराइज्ड कोल फायरिंग मेथड. पल्वराइज रीहीट नो. पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स 100 मेगावाट से कम. नॉन रीहीट स्टोकर फायर्ड. फायरिंग मेथड स्टोकर रीहीट नो. फ्यूल फीडिंग स्टोकर ग्रेट 100 मेगावाट से नीचे. मोस्ट कॉमन. एफिशिएंसी लोअर. रीहीट पल्वराइज्ड कोल. फायरिंग मेथड पल्वराइज्ड. रीहीट यस. फ्यूल फीडिंग पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स 100 मेगावाट से ज़्यादा, यूजुअली हायर एफिशिएंसी. रीहीट स्टोकर फायर्ड. फायरिंग मेथड स्टोकर. रीहीट यस. फ्यूल फीडिंग स्टोकर ग्रेट. टिपिकली यूज 100 मेगावाट से ज़्यादा, रेयर ऑफ 100 मेगावाट से कम, हायर. रीहीट का मतलब स्टीम को टरबाइन में एक बार यूज करने के बाद फिर से बॉयलर में गर्म करना. मतलब स्टीम पहले एचपी टरबाइन में जाती है, फिर वापस बॉयलर रीहीटर में दोबारा हीट होती है, फिर एलपी टरबाइन में जाती है. इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, स्टीम ड्राई रहती है, टरबाइन ब्लेड सेफ रहती है. स्टोकर एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो कोल को ऑटोमेटिकली बॉयलर फर्नेस में फीड करता है. यहाँ कोल पाउडर नहीं बनाता, सीधा ग्रेट पर जलता है. कोल से स्टोकर, स्टोकर से बॉयलर, बॉयलर से एचपी टरबाइन, फिर रीहीटर, फिर एलपी टरबाइन, फिर जनरेटर. A simple slide wire potentiometer is used for measurement of current in a circuit. The voltage drop across a standard resistor 0.2 ohm is balanced at 75 centimeter. Find the magnitude of the current if the standard cell EMF of 1.5 is balanced at 50 centimeter. Slide wire potentiometer measurement of current 3D practical setup.
Driver cell provides current to potentiometer. A rheostat for controlling current. Dry cell. Standard cell E बराबर 1.5 वोल्ट. Standard resistor R बराबर 0.2 ohm whose current is be measured. Jackie sliding contact. Galvanometer. Null detector. Circuit diagram. Driver cell, rheostat, 100 cm potentiometer wire, jack, standard cell 1.5 volt, R 0.2 ohm, at balanced point, no current flow through galvanometer. Standard cell 1.5 volt, balanced length of 1.5 volt, 50 cm. Standard resistor R बराबर 0.2 ohm, unknown potential balanced at 75 cm. Current through resistor I. For 1.5 volt standard cell balanced at 50 cm. For unknown across R बराबर 0.2 ohm. पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है E बटा के L, यानी 1.5 बचा के 50 यानी 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर. वोल्टेज अक्रॉस 75 सेंटीमीटर. लेंथ V बराबर के गुणे के 75 बराबर 0.03 गुणे के 75 यानी 2.25 वोल्ट. करंट थ्रू द रजिस्टर I बराबर V बटा के R 2.25 बटे के 0.2 यानी 11.25 एम्पियर आंसर आ जाएगा. पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर E बटा के L. वोल्टेज V बराबर के गुणे के L2. करंट I बराबर V बटा के R. EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज V. स्मॉल L बैलेंस लेंथ ऑफ E सेंटीमीटर. L2 बैलेंस लेंथ ऑफ अननोन सेंटीमीटर. R रेजिस्टेंस ओम में, I करंट एम्पियर में. Which one of the following statement with respect to fuse is not correct? The inverse time current characteristics of a fuse makes it not suitable for overcurrent protection. The time required to break out the fuse depends upon the magnitude of excessive current. The greater the current, the smaller is the time taken by the fuse to blow out. A fuse has inverse time current characteristics as shown. टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में. देखिए जब टाइम बढ़ रहा है तो करंट का मान कम हो रहा है. एडवांटेज, इट इज द चीपेस्ट फार्म प्रोटेक्शन अवेलेबल. इट रिक्वायर नो मेंटेनेंस. इट्स ऑपरेशन इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक. इट कैन ब्रेक हैवी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइज और स्मोक. द इनवर्स टाइम current characteristics of a fuse makes it suitable for overcurrent protection. So incorrect statement is option 3. The inverse time current characteristics of a fuse makes it not suitable for overcurrent protection. Current rating of fuse. The maximum value of current in which the fuse element can normally carry without overheating or melting. It depends upon the temperature rise of the contact of the fuse holder, fuse materials and the surroundings of the fuse. Fusing current, it is minimum value of current at which the fuse element melts and break the current. Its value is more than the current rating of the fuse. The fusing current depends upon the type of material, diameter and length. Fusing factor, its ratio of minimum fusing current to the current rating of the fuse. Fusing factor of minimum fusing current बटा के current rating of fuse. It is always more than 1. A direct voltage is applied to a peak diode voltmeter whose scale is calibrated to read RMS voltage of a sine wave. If the meter reading is 36 RMS, the value of the applied डायरेक्ट वोल्टेज 51.51 वोल्ट. देखिए यहाँ पे RMS मान दिया हुआ है, पीक मान निकालना है.
तो पीक वैल्यू बराबर होता है RMS गुणे के करड़ी में 2। फंक्शन जनरेटर AC साइन वेव सोर्स, इनपुट साइन वेव, डायोड, कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। RMS कैलिब्रेटेड मीटर रीड्स RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव। आउटपुट टू मीटर पीक वोल्टेज। सर्किट डायग्राम देखिए AC और DC इनपुट, डायोड, कैपेसिटर, वोल्टेज। कंपोनेंट यूज्ड इन 3D रियल इमेज। फंक्शन जनरेटर provides AC साइन वेव इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट। एग्जाम्पल यूज सिग्नल सोर्स, डायोड IN 4007, रेक्टिफायर द सिग्नल अलाउ ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल, चार्ज द कैपेसिटर टू पीक। कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट, चार्ज टू द पीक वोल्टेज, होल्ड द पीक वोल्टेज, reduces ripple। RMS calibrated meter, scale calibrated in RMS value, measured VRMS of sine wave connected across capacitor। Connection terminal for input and output connection, help in making secure connection। Experiment board, breadboard panel, input output meter। Common ground, provides mechanical support, easy and safe connection, common ground provided। In the moving coil instrument, the low resistance connected in parallel with the coil is called a shunt। Isotopes are element having same atomic number but different mass number। Isobar, the nuclei have same mass number but different atomic number। A change in excitation of an alternator running in parallel with another alternator affects its kVA output and power factor but not its kilowatt output। A change in excitation of an alternator running in parallel with another affects only its kVA output. It does not affect the kilowatt output। A change in excitation thus affects only the power factor of its output। Let the initial operating condition of the two alternators be identical. Each alternator supplies equal kilowatt and kilovolt ampere reactive of load, thus the operating power factors being equal to the load power factor। Now let the excitation of alternator number 1 be increased so that excitation EMF of alternator first E1 becomes greater than E2। The difference between the two EMFs set up a circulating current IC। IC बराबर E1 माइनस E2 बटेगी 2ZS। देखिए यहाँ पे 2I, E1 से I करंट, E2 से I करंट फ्लो हो रही है। IC करंट फ्लो होगी। नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2 A। As seen, IC is vertically added to the load current of alternator number 1 and subtracted from that number of 2। The two machines now deliver load currents I1 and I2 at respective power factors of cos phi1 and cos phi2। These changes in the load current lead to changes in power factor such that cos phi1 is reduced whereas cos phi2 is increased। However, the effect on the kilowatt loading of the two alternators is negligible, but kilovolt ampere reactive kVAR1 supplied by alternator number 1 is increased, whereas kVAR2 supplied by alternator number 2 is
correspondingly decreased as shown by the KVA rating. Electric shock can cause damage to muscles, tissue, internal organ. The human body is an excellent electrical conductor, and electric shock or electrocution occurs when the current accidentally passes through someone's body. The possible consequences of an electric shock on the body: a shock can cause muscles spasm, a shock can cause cardiac arrest, a shock can cause burn to tissue and organs, a shock can affect the nervous system. The ACSR provides lower sag and longer span than copper conductor. Effect of change in excitation of an alternator running in parallel with another alternator. देखिए, कॉमन बस बार सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम, DC एक्साइटेशन, exchanging excitation field current of alternator 1, ठीक है, IF1, excitation increased field current, IF1 increased generated EMF, E1 increased load, IF2, alternator 2, excitation unchanged, field current constant, field current IF2 बराबर constant, generated EMF E2 constant. Both alternators supply the load in parallel. Voltage at bus bar remains constant. Parallel operation schematic diagram: common bus bar alternator 1, alternator 2, E11 E12, field IF1. तो देखिए लोड E1 E2 generator EMF alternator IF1 IF2, field excitation current V constant, terminal voltage bus voltage F constant, frequency. Both alternators share the load. Aluminum conductor, steel reinforced. It is one of the standard conductor composed of one or more layer of hard drawn 3150H19 aluminum wire that is on galvanized coated steel core. The ACSR conductors are mainly used in distribution and transmission lines due to their high tensile and strength, economical design, less weight, suitable for medium and long periods with fewer support, and good properties of sag and high voltage overhead lines. Expanded ACSR steel standard filler material, aluminum stands. Advantage of ACSR conductor over copper conductor: the conductivity of the ACSR is less than the copper conductor. ACSR conductor can be used for medium and long span and needs less support. The mechanical performance and tensile strength of ACSR conductor are high. It provides lesser sag than copper conductors. If P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer on full load, find the ratio of P1 and P2 such that maximum efficiency occurs at 80% load. Efficiency of transformer: the efficiency of the transformer X S cos 5 बटे के X into S cos 5 plus P1 P2, where X fraction of load, S apparent power in kVA, P1 iron losses, P2 copper losses. The transformer will give maximum efficiency when its copper losses are equal to iron losses. Efficiency is maximum at some fraction X of full load. X बराबर कौड़ी में P1 बटे P2 कैलकुलेशन. Given that P1 iron losses, P2 copper losses, X fraction of load at maximum efficiency, यानी कि बोले तो 0.8. देखिए वेयर X बराबर कौड़ी में P1 P2, तो यहाँ से देखिए P1 P2 बराबर हो जाएगा 10.8 का स्क्वायर, यानी 16 बचा 25 आ जाएगा.
What is the percentage saving in feeder copper? If the line voltage in a two-wire DC system is raised from 100 volt to 200 volt for same power transmitted over the same power distance and having the same power losses। देखिए यहाँ वोल्टेज 100 से 200 कर दिया जाता है, पावर सेम रहे, डिस्टेंस सेम रहे, पावर लॉस सेम रहे, तो कॉपर सेविंग कितनी होगी? पावर बराबर होता है पी बराबर वी आई, पावर सेम है तो वोल्टेज देखिए 100 से 200 हो जा रहा है, मतलब कि वोल्टेज दो गुना हो जा रहा है। तब देखिए आई प्रोपोर्शनल 1/v यानी करंट जो होगा वह हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि कॉपर जो होता है करंट के स्क्वायर के अनुपाती होता है। अगर करंट हाफ है तो देखिए जो कॉपर होगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि नया कॉपर ओल्ड कॉपर का 25% होगा, यानी कि 75% कॉपर बच जाएगा। The gross mechanical power developed by a DC motor is maximum when back EMF is equal to half the applied voltage। Derivation: a two-wire DC distributor cable 800 meter long is loaded with 1 ampere per meter। Resistance of each conductor is 0.05 ohm per kilometer। Calculate the maximum voltage drop if the distributor is fed from both ends with equal voltage of 220 volt। देखिए यहाँ पे केबल का लंबाई जो डिस्ट्रीब्यूटर 800 मीटर है, यानी 0.8 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर का रजिस्टेंस 0.5 है, तो पूरे 0.8 किलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए 0.8 में 0.05 से गुणा कर देंगे। और देखिए 2 तार है तो इसमें 2 का भी गुणा कर देंगे। टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड फ्रॉम बोथ एंड्स इक्वल वोल्टेज। 220 वोल्ट डीसी सोर्स लेफ्ट एंड, 220 वोल्ट डीसी सोर्स राइट एंड, 1 एम्पियर लोड, 1 एम्पियर लोड, 1 एम्पियर लोड, 1 एम्पियर लोड, 1 एम्पियर लोड। देखिए मिड पॉइंट एक्स बराबर L/2, L/2 400 मीटर, L/2 400 मीटर, L लेंथ 800 मीटर। देखिए करंट फ्लो, करंट फ्रॉम लेफ्ट, करंट फ्रॉम राइट, दोनों तरफ से करंट सेंटर की तरफ फ्लो करता है। वोल्टेज प्रोफाइल इस प्रकार हुआ, देखिए मतलब कि मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम ड्रॉप भी यहीं होगा मिड पॉइंट पे। एल का मान 800 मीटर है, यहाँ पे 0 है, प्लस 220 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ मैक्सिमम होता है? दोनों तरफ से इक्वल वोल्टेज 220 मिल रहा है, इसलिए करंट दोनों एंड से सेंटर की तरफ आता है। सेंटर मिड पॉइंट पर वोल्टेज सबसे कम होता है, इसलिए मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिड पॉइंट पर होता है। वोल्टेज ड्रॉप फार्मूला ड्राइवेशन, कंसिडर लेफ्ट हाफ लेंथ L/2। देखिए डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड पर करंट I कोष्टक में L/2 माइनस x, छोटे से एलिमेंट dx का रेजिस्टेंस R गुणे dx। वोल्टेज ड्रॉप ओवर दिस एलिमेंट dV बराबर I कोष्टक में L/2 माइनस x इंटू R dx। 0 से x बराबर L/2 तक इंटीग्रेट करने पर लेफ्ट हाफ का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I इंटू IR इंटू L/2 का स्क्वायर बटे के 2। दोनों तरफ का ड्रॉप सेम होगा, टोटल मैक्सिमम ड्रॉप बटे मिड पॉइंट होगा 2 गुणे के कोष्टक में IR इंटू L/2 का स्क्वायर बटे के 2, हो जाएगा IR L स्क्वायर बटे के 4 पूरे के बराबर, यानी IR इंटू L स्क्वायर बटे के 8 हो जाएगा। यही वजह है कि फार्मूला में 8 से डिवाइड किया जाता है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर्स पर किलोमीटर
2 गुणे के 0.05 यानी 0.10 ओम पर किलोमीटर। टोटल रेजिस्टेंस फार 0.8 किलोमीटर। आर बराबर 0.1 गुणे 0.8 मतलब 0.8 ओम। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आई आर एल स्क्वायर बटे के 8 यानी 1 गुणे के 0.08 गुणे के 0.8 का स्क्वायर बटे 8 यानी हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 8 वोल्ट। यहाँ पे देखिए टोटल करंट आई बराबर हो जाएगा 1 गुणे के 800 यानी 800 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप एट मिड पॉइंट का फार्मूला देखिए आई आर बटा के 8 होता है यानी कि 800 गुणे के 0.08 बटा के 8 यानी 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन। The electrical insulator are used to prevent the unwanted flow of current. Electric insulator. An electric insulator is a material in which electric current does not flow freely. The atoms of the insulator have tightly bound electrons which cannot readily move. The following is a list of electrical insulator example: glass, plastic, wax, rubber, dry air. There are innumerable uses of insulator. They are listed below. It prevents the passing of high voltage in an electric circuit. It helps in reducing the cost of energy. It helps in saving the environment by controlling the emission of pollutant. It improves process performance. It protects from electric shock or electrocution. In SCR, when the anode terminal is positive with respect to cathode terminal, the number of blocked junction is 1. Silicon controlled rectifier SCR. It is a unidirectional 3-terminal 4-layer semiconductor device consisting of alternate layer of p-type and n-type material. Hence has 3 p-n junction Z1, Z2, Z3 anode gate cathode. Figure J1, J2, J3 anode gate cathode. Figure 2. The working of SCR can be understood by analyzing its behavior in following modes. Forward blocking mode of SCR. Here a positive bias is applied to the SCR by connecting the anode terminal to the positive and cathode terminal to the negative terminal of the battery. Under this condition, junction J1 and J3 get forward biased, while junction J2 gets reverse biased. Thus, the number of the blocked PN junction J1. Forward conduction mode SCR. The SCR can be made to junction either by increasing the positive voltage applied at anode terminal beyond the breakover voltage, or by applying a positive voltage at the gate terminal. Reverse blocking mode of SCR. In this mode, the SCR is reverse biased by connecting its anode terminal to the negative end and the cathode terminal to the positive end of the battery. This leads to the reverse biasing of the junction J1 and J3, which in turn prohibits the flow of current through the device in spite of the fact that junction J2 remains in forward biased condition.